So my hope my screen is visible. So once again, very good evening to all of you. So this is the question of the day. So discuss the provision of Panchayat extension to the scheduled area. There is a PESA Act in 1996 and how it is helpful for empowerment of the tribals of India. So this is 10 marker question, 150 words. You have to write in 2 pages and the time you are giving, I'm giving the time, it is 10 minutes. ठीक है? So आप लोग पहले लिख लीजिए copy में. After that, I'll set the timer, then you'll have to write and we'll evaluate your copy. Please note down this question and the moment you have completed, please inform me. I'll set the timer. Discuss the provision of Panchayat extensions to Schedule Area Act, that is PESA Act 1996, how it is helpful for empowerment of the tribals of India. So देखो, this question can also very important for writing an answer also. Na? So if you just remember this question, so this can be a good point of tribal empowerment. You can talk of PESA Act is also helpful for empowerment of the tribals. So by reading question, you are not only solving the only question, you are also getting a point that can be written somewhere else. Na? That is the importance of reading all these previous year question or important questions. ठीक है, I'm setting the timer. आप लोग लिख लिए? Yes, sir. Okay, so I'm setting the timer. So it's for 10 minutes as always. So now it is set. Please write your question and then please upload within 5 minutes. So I'll come back after 10 minutes or 5 minutes. Okay, we'll then discuss your answer. Stop writing and post your PDF in this Telegram group. Discuss the provision of Panchayat extension to the schedule area. PESA 1996. How it is helpful to empower for the empowerment of tribals in India. Okay, very good. So PESA Act enacted under 243M based on the fifth schedule. Based on fifth schedule, PESA Act 1996 extended its governance to the scheduled area, safeguarding tribals' right. Very good. So this scheduled area is also in part X. Na? You're also right. I know you have written very good, but for your knowledge, I'm adding. If you're adding all this provision, that is what make your answer holistic. Okay. Okay, sir. So already I have told you, whenever you are making a heading, put that in box. That is clearly it is I'm giving that. This is my heading. So heading should be put in box and subheading should be underlined. Okay. So it's recognize the Gram Sabha as the nucleus of tribal self-governance. Excellent point. Then it provide mandatory consultation. Okay. Consultation before land acquisition and rehabilitation. Yes, this is also good. It provide for ownership of forest produce, minor forest produce. Yes, you have written minor forest produce in tribal community. Okay. It regulate the money lending and prevent exploitation. This point is also very good. So it provide tribal custom and traditions. Okay, it's also good. So yes, this is very good. I think to manage the space better, I think you can also write like that. Na? मैं आपको example दे रहा हूँ. I'm not saying you always write like that. You can write like this also. 1 out of 20 question, you can write sometime like that. Okay. So if you're writing, that break the monotony. Na? So for example, Gram Sabha, you can write like that. Gram Sabha is the nucleus of self-governance. Just write here. Then here it is mandatory. You can start from here and end here. Second point. Then third point, you can start like that. So, sometime by writing that, it will reduce some amount of time. Let's say you can complete your question in 5-6 minutes. That 1 minute is helpful to write somewhere else. Okay. चलिए बहुत बढ़िया. These points are excellent points. But thing is that you need to add examples. Na? Okay, sir. Look, why I'm saying this, because the thing is that those who are evaluating our copy, they are not studying all this polity or this constitution. They are not studying all these things, but they are reading newspaper regularly. So if you add some example from the Hindu, Indian Express, so they will relate that yes, the student is studying a lot of things. So that is what my intention. So add example whatever you are saying. So let's say tribal custom, you can give example of recently this tribal council passed for preservation of their culture. Okay.
if you are collecting something, then whenever you are reading, you have to link that. Yes, I can give this example in PESA Act. I can give this example in Forest Right Act. I can give this example under the Prevention of Atrocity Against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe. So reading newspaper is not about only reading, thinking that which section I'm going to use. So next part is empowerment of tribals. I think you can write completely how PESA helpful in empowerment of tribals. If you are writing heading in a brief way, so no need to repeat. So that means we are very clear what is the point is talking about. It's talking about how or the way the PESA is helpful for empowerment of the tribes. Rest you can simply write points. So that means heading is good, then sub point you can just write like that. Strengthen grassroots democracy and participation in bulk of our tribal population. You have to add. Okay, tribal people. So it secure land, forest, resource right through tribal community. Like देखो, you can say it's community land, community forest, and resource over the tribal people. Like tribals having their right over this community forest land right. So मतलब point should be self-explanatory and it should be very crispy. थोड़े से इस पे हमें अच्छा कर सकते हैं. It enhance the economic empowerment through minor forest produce. Yes. तो minor forest produce को हम लिख सकते हैं MFP ना, minor forest produce. So it preserve the cultural identity and tradition customs of tribals. ठीक है. हाँ, आई थिंक ये भी आपने लिखे एम्पावर्स, बट थोड़े से अगर पॉइंट्स में लिख देते हो तो ज्यादा क्लैरिटी आती है. सो इट प्रिवेंट्स और लिमिट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स अदर एजेंसीज. ठीक है. और पॉइंट यू कैन ऐड, रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी ना, ब्यूरोक्रेसी इंटरफेरेंस in tribal area, because what earlier used to be the forest, forest ranger or the IFS officer, so they are ruled over this area without consulting tribal people, but now they have to consult the tribals. So PESA translate constitutional ideals into tribals. The PESA translate constitutional ideals into tribals community, ensuring participatory governance, cultural preservation, development in the fifth schedule area. Yes, very good. Excellent conclusion. Okay, very good. So very good answer. Exceptional answer. Introduction is good. So you'll get good mark. Discuss the okay. So the provision of the part 8 of the constitution. You no need to write this also. The part 8 of the Indian Constitution provide for the the administration of the tribal area. You can start from there also. For establishment of Panchayat Raj institution, however, the Parliament have extended the Panchayat for fifth schedule area. The 10 state having, it's also very good. It's also very good. The provision of the Part X of Indian Constitution provides for the establishment of Panchayat Raj institution. Acha, Part 9. You are talking about Part 9. Okay, okay, very good. So Part 9. Okay. Yes, yes. Excellent, excellent introduction. So next is the provision are follow. अरे बाबा, प्रोविजन ऑफ लिखो इसको क्लियरली. प्रोविजन ऑफ द पैसा एज फॉलो. बस समझो. देखो क्या होती है ना, मान लो कभी कभार इवालुएटर अभी थोड़ा सा अच्छा मूड में नहीं है, तो भैया किसका प्रोविजन है? वी हैव टू फैसिलिटेट ना. सो प्रोविजन ऑफ पैसा एक्ट. Yes, sir. नॉट नहीं फॉलो भी. हाँ, इफ यू राइटिंग दिस मच, देन इफ यू आर राइटिंग लाइक 1996, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन विल बी रिलेट. ठीक है, तो उसको बार बार जाके क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट माय पॉइंट. The provision of the part 9 of the constitution with certain modification suitable to the it's provision X actually tribal area में. सर पार्ट 9 में मॉडिफाई करके उसको ट्राइबल एरिया में लाए. Okay, okay, ठीक है. So you are saying that part 9 can be modified to apply part 9 of the constitution with certain modification
देखो which certain modification can be applicable to the tribal area, आप इससे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तो थोड़े बहुत डाउट नहीं होना चाहिए। देखो your Yes, point sir. should be very crispy and self explanatory, मतलब आपको 2 लाइन से ज्यादा, मतलब मैं जैसे दिखाऊं, ये आइडियल आपका होना चाहिए 2 लाइन, आइडियल जो होती है, इट कैन बी 1 लाइन ऑल्सो, इट कैन बी 3 लाइन ऑल्सो, 3 लाइन से ज्यादा कोई पॉइंट्स नहीं जाना चाहिए। सो प्रोवाइड सेल्फ रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, establishment of Gram Sabha as a major institution for governance and democracy, keeping in mind the, what is that? Traditional practices. देखो, one more thing, whenever you are writing anything, try to understand one thing very clearly. Whenever we are reading some words, we are not reading entire words. Actually, we read 1 or 2 letter of the starting and 1 of the 2 letter of the ending, and in between we just guess what you have written. So same way, whenever you are writing anything, you should write 2 things: first letter, second letter clear, and last letter very clear, एंड एनी वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, तो दोनों लेटर बड़े क्लियर होना चाहिए, स्टार्टिंग का लेटर, एंड का लेटर, दो दो, बाकी Yes, हम sir. गेस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये लिखा, क्या है ये, अंडरस्टैंड ना। Yes, sir. तो जब भी आप एक बार देख लेना, आप एक बार देख लेना, जब भी कोई बड़ा सा कोई एक वर्ड है, उसका बीच का गायब करके देखना, आपका माइंड रेस्पॉन्ड कर लेगा। तो एक्चुअली दिस इज वे वी आर राइटिंग और रीडिंग समथिंग, सो प्लीज स्टार्टिंग 2 लेटर को अच्छा रखना है। सो कीपिंग इन माइंड द ट्रेडिशनल practices while formulate rules or policies, okay, very good. So to safeguard the tradition cost, ये क्या है, tradition customs of the tribal population, yes, if possible add some example। ठीक है, गुड पॉइंट्स, बट थोड़ा सा जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा आपको पॉइंट को थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। पॉइंट शुड बी Yes, वेरी sir. स्मॉल टू द पॉइंट, बट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी आप बोल रहे हो ना कि बड़े क्लियर होना चाहिए। क्रिस्पी, ओके। You have to add lot of examples to support your argument. So how it is empowering the tribals, safeguarding, देखो whenever you are not getting any time, simply write how it is empowering tribals, one letter, self write over their property, one point you can write, and instead of living, इससे अच्छा तो ये मार्क्स मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो, जब Yes, आपको sir. टाइम Yes. नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, देन यू कैन राइट लाइक दैट, ओके। Yes, sir. safeguarding the traditional custom rights, ठीक है, कोई नहीं, फोस्टर कम्युनिटी राइट, ये क्या है, कंसेंसस गवर्नेंस कैन बी मैनेज, चलिए ठीक है, गुड पॉइंट, बट यू नीड टू एक्सप्लोर हियर मोर पॉइंट्स एंड यू नीड टू राइट द कंक्लूजन आल्सो। चलिए बहुत अच्छा है, बट कोशिश कर रहे हो, डोंट बी नो। ठीक है, चलो डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 95% टू द, देखो एक चीज आप समझो, मैं आपको बताता हूँ, जब अगर इफ इन क्वेश्चन इट इज गिवन पैसा, in question if it is given a PESA as a abbreviation, then no need to write entire panchayat extension, so that means the question itself saying that we know what is PESA, so you can continue by writing PESA, because in question itself it is clearly mentioned that what is PESA, so no need to write again and again, so you can start from direct here, the PESA Act, you can direct start from here, PESA Act extend to the fifth schedule, state specifically for tribal people, inclusions to the mainstream local self government। ठीक है, चलो, सो स्टेट्स कवर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो प्रभात, इसका क्या अच्छा कर सकते हो पता है क्या, यहाँ पर यू कैन ड्रॉ इंडिया मैप, ठीक है, आप कैन दिखा, यू कैन राइट लाइक दैट द स्टेट, देखो सेम चीज है, बट ये ज्यादा अच्छा है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड,
देन यहाँ छत्तीसगढ़, दिस इज ओडिशा. सो दिस वे यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन. आई थिंक इंडिया में आप सबको ड्रॉ करना आता होगा या फिर नहीं आता है. मैं सिखा दूंगा जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बट आई विल सजेस्ट प्लीज राइट, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा. सो हियर यू हैव टू मैप, ड्रॉ ए मैप ना. That would like good. देखो देखो आंसर राइटिंग आपको लगता होगा कि दूसरे के आंसर से क्या सीखोगे. देखो अभी सीखने को मिला ना, हर एक चीज हम सीख सकते हैं. यस सर. ठीक है, सेम थिंग यू कैन ड्रॉ हियर. दिस इज रियली गोइंग टू फेच यू नो गिव अ गुड इंप्रेशन कि बंदे को क्या पता है भाई, ड्रॉ करके दिखा रहा है. दिस इज व्हाट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट यू शुड हैव. ओके. सर मैं भी सोचा था लिखने के लिए सब नाम, लेकिन वो सर बहुत ज्यादा टाइम देखो टेकिंग देखो हो जाता. नो नीड टू, देखो फुल नो नीड टू इवन ड्रॉ दी फुल इंडिया मैप. यू कैन ड्रॉ लाइक दैट ऑल्सो ना. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग इंडिया ना. या नीचे श्रीलंका बना दो और यहाँ लिख दो इंडिया. दैट कैन बी डन इन 5 सेकेंड ऑल्सो ना. इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना. चलो ठीक है. सो स्टेट नॉट कवर्ड, जरूरत नहीं है दिस. हाँ, यू कैन राइट 6 शेड्यूल इज नॉट एक्सटेंड टू 6 शेड्यूल इंक्लूडिंग आसाम त्रिपुरा ऑल दिस. यू कैन राइट दैट 1 पॉइंट. और नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस. Provision, I think you have not written. What is the provision? So you have written the significance. No, you have to write the provision. Even if you are writing same thing, but question what it is asking. Discuss the provision. Na? So this is what called the context. What it is asking, we have to write that. If it is asking the provision, we have to write the provision, not the significance. If it is asking significance, then we have to write the significance. If it is asking how it is, what are the challenges it is facing, we should focus more on the challenge. ठीक है, provision you have to discuss. क्या क्या उसमें, हाँ क्या क्या उसमें डिटेल्स है, क्या क्या करना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. ओके. टाइम लिमिट कारण वापस क्वेश्चन पे जा नहीं पाया सर. क्वेश्चन का एसेंस क्या है, तो वापस उसी में कंटिन्यू. नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके. सो आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसे करूंगा, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे दो चीजें को साथ में पैरेलली लाऊंगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं, कल देखता हूँ. पार्टीशन हो जाएगा ना, क्वेश्चंस भी हमेशा सामने रहेगी और नीचे उसका क्लॉक भी रहेगी. मैं उसको करता हूँ, कल करता हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस. क्या है? सेल्फ गवर्नेंस. यस, देखो सेम प्रोविजन इज ऑल्सो सेम, मतलब बट ई हेडिंग इज रॉन्ग ना. ensure that governance of tribal in the tribal area. Okay. Protecting tribal. देखो whatever you are writing, everything is okay, but the heading is not good, so that might create negative impression. So ensure the dream of constitution maker, DPSP article 14. Okay, article 40. So ensure development of infrastructure on water tap schemes, housing. ठीक है. थोड़ा थोड़ा तो प्रभात पेज पॉइंट फिल कर रहा है कि भाई 5 पॉइंट कैसे भी करके लिख दूं. राइट. ऐसे हम करते हैं पता है कहाँ, जब हमें कुछ नहीं आती है, एक दो क्वेश्चन होती है यूपीएससी में, वो लास्ट को रखते हैं. कुछ भी करके उसको मैं उसको सिखा दूंगा आपको. इवन इन यूपीएससी यू विल नॉट गेट टू राइट एवरी क्वेश्चन. जो दो क्वेश्चंस को कैसे लिखना होता है लास्ट पॉइंट में, जिसपे एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स मिल जाए. कुछ नहीं आता. एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज क्रायोस्फीयर, इतना फेक फेक के लिखे थे, मतलब आप सुनोगे ना सरप्राइज हो. मैं कहीं नहीं बताया था व्हाट इज क्रायोस्फीयर, फिर भी मैंने 2 पेज भर दिया था. बाकी मेरा आंसर अगर अच्छा है तो ऐसे भी इंप्रेशन से मिल जाएगा ना. चलो. द नेक्स्ट इज पावर. सो नो, क्वेश्चन इज हाउ इट इज एम्पावरिंग ट्राइबल्स ना. सो पावर्स नहीं होना चाहिए. हाउ एम्पावरिंग इट लिखना था सर. एम्पावर, एम्पावरिंग विद पावर. हाँ यू हैव टू राइट दैट. ठीक है. सो यू कैन से द वे इट इज एम्पावरिंग ट्राइबल्स और द पैसा इज ए गेटवे और पैसा इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट. यू हैव टू राइट लाइक दैट हेडिंग. ओके. ये एलिनेशन नहीं होगा. प्रिवेंशन ऑफ एलिनेशन ऑफ लैंड ना. ठीक है. विदाउट, ओके, alienation of the land cannot be done without consent. Yes, yes, you can say this is good point, or you have to write the points. Increase their economy of by controlling forest produce. Yes, this is also right. They can say control over minus forest produce. Or next is ensure administration and legally actions by their own elected led less confrontation. Okay. Therefore surely saw a drastic and wholesome development in the tribal area through giving wide power to grassroots democracy. Is very good. देखो at least whatever you are writing real time, so whatever mark you should get, getting here, you should be proud of it because you are writing in a constraint. Even if you are getting 2 marks, you should be proud of that.
जनरली वट एवर गिवन इन क्वेश्चन हेडिंग यू हैव टू राइट लाइक दैट. मैं इसको थोड़ा प्रिफर करता हूँ बिकॉज यू नो यू विल नॉट मिस द कॉन्टेक्स्ट. हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट मिस नहीं करोगे, इसलिए आपको लिखना होता है. ठीक है, वेरी गुड. बट प्रभात विल नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज बहुत सारी चीजें मुझे मिसिंग लगा है. ठीक है, सो ट्राई करना अच्छे करने के लिए नेक्स्ट टाइम. श्योर सर. अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तो आपको मैंने सिखाया कहाँ, कुछ नहीं सिखाया हूँ. मैं आपको आंसर राइटिंग में बहुत सारे सिखाने वाले हैं आगे. डोंट वरी, अभी तो हमने सीखे कहाँ, स्टार्ट ही नहीं किए कुछ. पैसा एक्ट, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया इज ए स्पेशल लॉ मेड ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज अक्रॉस 10 स्टेट्स. पूरा एकदम पैराग्राफ में भर दिया है ऐसे करके ना. इसको ब्रेक करो. देखो इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है. मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला इवेल्युएटर के पास टाइम ही नहीं है. उसको कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा कॉपी पढ़ के वो पीएचडी नहीं कर लेगा. वो तुम्हारा कॉपी को बस देख रहा है, पैसा मिलती है. ठीक है, so you can break this big point into small points, or you can write introduction small points. For example, you can start from the PESA Act is an special law made to protect the tribal community living in the fifth schedule area across 10 states. This much is very more than enough ना. ठीक है, Okay, sir. बाकी आई डोंट थिंक इसमें जरूरत नहीं है. इंडिया बेस्ड ऑन दी व्हाट इज दैट, बुरा कमेटी Yes, sir. कमेटी रिपोर्ट दिस लॉ गिव्स ट्राइबल्स द राइट. ये सब चीजें बचा के रखो, ये सब चीजें बचा के रखो. किसके लिए? जो एम्पावरमेंट कैसे करती है ना. सो यू कैन राइट, देखो इफ यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन इंट्रोडक्शन सो नॉट गेट पॉइंट इन योर रेस्ट पार्ट. सो हाउ पैसा एम्पावर ट्राइबल्स. सो पॉलिटिकल नहीं, फर्स्ट यू हैव टू राइट द प्रोविजन ऑफ पैसा बिकॉज देखो सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो. सीक्वेंस की में क्या बताया गया, हाउ इट इज हेल्प. सो फर्स्ट वन इज डिस्कस द प्रोविजन ना. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन, सो यू कैन नॉट मिस द सीक्वेंस. सो फर्स्ट आपको राइट करना पड़ेगा प्रोविजंस. दिस इज द सेकंड पार्ट ना, सेकंड पार्ट्स. So yes, political, self-governance and reservation, economic, control over land for a social protection, local welfare and habits. ठीक है, Sir, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, इसमें मेरा खत्म हो क्योंकि गया आपने मतलब यहाँ सब टाइम. लिख दिया ना, जितने सारे नॉलेज था यहाँ यही डाल दिया पूरा सर. स्टार्टिंग में. ये क्लियरली दिख जाता है. जब कोई इंसान इंट्रोडक्शन इतना सारा लिखता है उसका मतलब खत्म, आगे नहीं लिख पाएंगे वो ना. इसलिए इंट्रोडक्शन छोटा रखते हैं, 3 लाइन पे. एंड पैसा इज ए पावरफुल लॉ बिकॉज इट शिफ्ट पावर फ्रॉम टफ गवर्नमेंट. ठीक है, ग्रास रूट लेवल, गुड कंक्लूजन. ठीक है, मैं ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, आपको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, तो आपने मिसिंग कर लिए. फर्स्ट पार्ट इज मिसिंग प्रोविजन. सो फर्स्ट पार्ट को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोविजंस ना. प्रोविजंस, ये आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, ये आपका सेकंड पार्ट होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए. तो डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन. ठीक है, सो पैसा एक्ट अप्लाई टू द 73rd the PESA Act applied 73rd question of the 5th schedule. ये थोड़ा सा देखो स्टेटमेंट पे गड़बड़ी नहीं है. सो देखो पढ़ने के टाइम पे थोड़ा हमें क्लियरली बताना पड़ेगा. सो पैसा एक्ट बेसिकली एम्स टू एक्सटेंड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू 5th शेड्यूल एरिया. समझ रहे हो ना? Yes. नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. हम स्टार्ट कर रहे हैं, जितना सारा एरर हुआ यही करो. एरर एग्जाम पे नहीं होना चाहिए. दिस एक्ट एम्पावर्स ग्राम सभा टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेस एंड provide development plans. Okay, so how PESA is helpful? No, provision, you have to write fast provisions. This is the second part we have written. देखो चैलेंज तो पूछा ही नहीं है, चैलेंज तो पूछा ही नहीं. ये आपने क्या कर दिए, गलत कर दिया. देखो लिखे नॉलेज इज गुड बट थिंक इट इज नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन, तो आप क्यों लिखोगे?
सो फर्स्ट पार्ट आपका मिसिंग हो गया, सो हेल्पफुल नहीं है. इफ इट इज आस्किंग एम्पावरमेंट देन यू हैव टू राइट द एम्पावरमेंट वर्ड. Why I am emphasizing using the same keyword at the given in the question, because sometime maybe the evaluator may searching for कि ये बच्चा सब सच में लिखा है नहीं लिखा है. If you are writing this keywords, उसको लगेगा हाँ पूरा एकदम each and every parts is addressed in this answer, so you will get good marks. That is the reason I am emphasizing use same keywords as asked in your question. For example, provisions, you have to write provisions of PESA Act exactly as it is asking. So you will get good marks. Okay. So it is increase the representation of women and backward class. So you can write that, example like percentage to their population. You have to write like that. It has made the local government accountable to the people and also increase their planning regarding implementation of the schemes at the local levels. Drinking water. Yes, yes. Very good. It is also enforced. It also enforce the central support through various scheme and कंटिन्यू चेक्स एंड बैलेंसेस. जब भी आप ऐसे वेरियस चीजें लिखते हो एग्जांपल्स ऑलवेज. ओके, ये तो पूरा भेग हो जाता है ना. ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम लिख के ना 50 पेज भी भर देंगे, बट वो भेग हो जाता है. जब भी आप चीजें लिखते हो यू कैन राइट एकलव्य मॉडल स्कूल, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड. जो भी आप बताना चाह रहे हो एक दो एग्जाम्पल दे दो. एकलव्य मॉडल स्कूल्स ना, उसको बोलते ई मर्स, एकलव्य मॉडल स्कूल्स. आई थिंक ई मर्स, EMERS ऐसे कुछ है. एकलव्य मॉडल एजुकेशन रेसिडेंशियल स्कूल आपको पता होगा. एकलव्य मॉडल स्कूल्स देख लेना, उसको एग्जांपल आप लिख सकते हो. 15 फाइनेंस कमीशन एंड स्वामित्व स्कीम इज ग्रोइंग सेंट्रल सपोर्ट. आई थिंक ये पंचायत का आपने यहाँ ऐड कर दिया, पंचायत का वो था. ठीक है. challenges, this is not asked in directly in the this is not in context, not as per demand of the question. If we are writing this, you will not get anything for that, but हाँ इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलती है. ठीक है. रेदर इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन हो जाता है कि यू आर मिसगाइडिंग, कि थोड़ा होती है. अगर कॉपी देखो, दो तरह की कॉपी चेक होती है. एक तो आपका स्टेट लेवल पे कितना आप लिखे, सेंटीमीटर डाल देते हैं स्केल का, हाँ 5 सेंटीमीटर 3 मार्क्स, ऐसा टाइप की होती है स्टेट लेवल पे. बट यूपीएससी में बड़े स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ले लेते हैं ना. सो पैसा एक्ट इज गुड फॉर revolutionize the changes at the local level with few reforms like there should be clear function division across PRI. This is not PRI ना. देखो ये PRI नहीं है, हम PRI को एक्सटेंड कर रहे हैं ट्राइबल एरिया को. ठीक है ना. तो ये PRI नहीं है. थोड़ा सा अच्छे से प्लीज रिवाइज करिए. जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए. हर जगह पे सोचिए क्या क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से ना, तो उस पर आप प्रिपेयर करिए. ठीक है. तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, क्योंकि आपने एक पार्ट मिस कर लिया ना. 3 तो मिल सकता है. आपने लिखे अच्छा खासा. डरना नहीं है. अभी आपको आ रहा है ये 3 मार्क्स, अगर आपने लिखोगे 1 महीने तक यही 3 बढ़ के आपका हो जाएगा 5. ठीक है. डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. यही चीज हमें रखना है.